This is Mamoon Rashid for Recent Times, and I'm welcoming one of the best trainers from Rajasthan. He is Shamim Ahmed, and I hope you'll just get a lot from his talk. And he'll just share his experience and some of the techniques that how you can learn English. ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ I hope you're just going to get a lot from this video. Shamim Saab, at first I would like to welcome you in my channel Recent Times. Thank you so much. Hello everyone, this is Shamim Ahmed. I'm a TESOL certified trainer. I'm also certified by British Council for teaching Ielts. I've been teaching for more than 6 years and I have mostly taught students from Kerala, South India. And before this pandemic, I was in Delhi. So I'm well acquainted with the learning patterns of students from not only North India, but also South India. And nowadays, as you know that, as it's lockdown, so nowadays I depend on online tutoring only. However, I have some future plans. So I'm planning to move to your own place, Malerkotla, to which I would like to congratulate for becoming a district. It's a very good news for everyone, and you have got a very great opportunity to grow in your life. Shamim Saab, I just want to ask you some of the questions as you said that you are coming to my place, Malerkotla. Just let me know that what is the difference of teaching, handling the people like you have experience in handling South Indian students and you taught some of the students, Punjabi students in Delhi, and you're having experience of teaching Rajasthani people. What is the difference? Do you think that is it कोई ये ऐसा भी वे आउट होता है कि अलग-अलग बंदों को अलग-अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है? Students from every place in India has a commonality, which is everyone is afraid of English. Yeah, it is. So अगर आप ये जानना चाहें कि कैसा लर्निंग पैटर्न में डिफरेंस है तो हमारे जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं पंजाबी स्टूडेंट्स हैं दे आर इंफीरियर दे आर मोर इंफीरियर देन स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला वन ऑफ द मेन रीजंस इज लैक ऑफ बेसिक्स सो बेसिक्स में बहुत उनको इंफीरियरिटी फील होती है उनको मालूम है कि उनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं उनको इंफीरियरिटी फील होती है एंड देन कम्स द एनवायरनमेंट एज वेल टू लर्न अ लैंग्वेज वी नीड टू हैव एन एनवायरनमेंट इन आवर फैमिलीज इन आवर सोसाइटी people do not usually speak in English whether they know it or they don't know so when they don't know they also do not even try to speak so how can you develop an environment आप कैसे एक माहौल create करेंगे whereas in South India, a state like Kerala, students they get an opportunity. They have some kind of environment so that they feel persuaded to speak in English. तो हमारे में पंजाबी में बात करते हैं, हिंदी में या राजस्थानी जो मदर टंग है उस पे ही बात करते हैं, बोली का ज्यादा यूज करते हैं. So that's a main problem. But in my teaching, I depend mainly on speaking in English. Try to speak as much as possible. Don't shift to translate. And here is the moment when most of the trainers do this thing very wrongly. They switch to Hindi very quickly. So they depend on translation. आप translation नहीं सीख रहे हैं. राम खाना खाता है, सीता गाना गाती. No, the world of learning language has completely changed in India. So in our TESOL program, I learned this thing that to contextualize learning. हम उसको context में पढ़ते हैं, एक situation create करते हैं, then we try to talk in English, only in English. So उसमें हम अपनी fluency पे काम करते हैं. IELTS के students को जो जरूरत होती है वो ये ना करें, then उनमें errors नहीं होनी चाहिए. So इस basis पे वो
इवेल्युएट किए जाते हैं, और उनके अच्छे बैंड्स तभी आते हैं जब फ्लुएंसी अच्छी होती है स्पीकिंग के अंदर, एरर्स खत्म होती हैं, और इन इनको ओवरकम होने के तरीके हैं. देयर आर मेथड्स which we can use to overcome these loopholes. देन शमीम साहब, यहाँ पे एक So that's the thing. बात मेरे को बताएं कि जो बंदा आइल्स करना चाहता है, जो बच्चा आइल्स करना चाहता है, उसको बिगिन कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? That's a good question. From where he should begin? So here comes the role of the trainer who is going to evaluate you. जैसे आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है और वो एग्जामिन करके बताता है कि पेशेंट के अंदर ये चीज की डेफिशिएंसी है. तो उसी तरह से एक अच्छा ट्रेनर वो होता है जो कि इवैल्यूएट करता है अपने स्टूडेंट को. वो देखता है कि इसके अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है. And here comes a moment for the students as well. They should not take this kind of criticism negatively. It's a kind of feedback, and they should always take it positively. What you have, you have. Or you don't have, you don't have. So acceptance is really important. आप accept कीजिए. मुझे नहीं आता तो नहीं आता. अब मुगालतों में रहेंगे, then there will be a confusion. You will not get what you are really looking for. आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, नहीं. इवैल्यूएशन ले टीचर से कि आपको कितना आता है और कितना सुधार सकते हैं. एंड बिलीव मी, डोंट बी इंफीरियर. आपने बहुत सी ग्रामर सीखी है अभी तक, काफी कुछ सीखा आपने. एंड नाउ व्हाट वी नीड, वी जस्ट नीड टू पॉलिश दैट. सो दैट्स द थिंग. और शमीम साहब, जैसे मतलब मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की ऐसी होती है, हम यहाँ पे बोलते हैं कि गांव का स्टूडेंट है, उसको ज्यादा नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेजेस दे आर विलिंग टू मूव अब्रॉड. दे विल गो फॉर आइल्स, दे विल गो फॉर अदर आई मीन टेस्ट, जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट हैं वो करना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं टेस्ट. तो उनको कैसे प्रिपेयर करोगे आप बिगिनिंग से? जैसे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि go on, sir. Let me tell you that students who hail from countryside, rural areas, and they have studied in government schools, they have got a very good command at grammar. उनकी ग्रामर बड़ी अच्छी होती है. बट जरूरी क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट में बोलने की प्रैक्टिस करना. सो यहाँ आके आपको आपने जितनी ग्रामर समझी है या अब्सॉर्ब की है, उसको आप यूज लेना सीखते हैं, कैसे बोला जाए. सो सबसे बड़ी चीज, हम ग्रामर पे इतना फोकस ही ना करें. क्या कॉमन एरर्स होती हैं, उनको कैसे रिमूव करना है, वो ट्रेनर की हेडेक है. इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही विल हेल्प यू टू ओवरकम दोज एरर्स. योर मेन टारगेट इज टू बिकम हैबिचुअल ऑफ स्पीक इन इंग्लिश, एंड अबव ऑल बिकम हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश. The day you realize that you are able to think in English naturally, there is the moment for you to conclude that yes, I can speak in English. So आप जब सोचने लग जाएंगे ना इंग्लिश के अंदर, तब आप समझ जाएं कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और सीख रहे हैं बहुत अच्छे से. बट आप ट्रांसलेशंस पर डिपेंड मत होइए. आप वो ट्रांसलेशन वाला नहीं, आप कॉन्टेक्चुअलाइज पढ़ेंगे, सिचुएशन के अंदर डिस्कस करना शुरू करें. फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कॉमन एरर्स, काफी कुछ चीजें होती हैं जिस पे हमें काम करना होता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. लाइक अ फ्यू डेज अगो, Mr. Mamun, he asked me, is it difficult to learn English? My next question was that. So okay, so again, that your question is there. So my answer is, it is difficult. It is difficult as long as you want to make it difficult. It is difficult as long as you don't work hard. It is difficult for lazy people. It is difficult if you just want to get it just like that. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. Otherwise, it will be difficult. It will be difficult for you if you are more aware of what the others will be thinking after listening your English. लोग क्या सोचेंगे, ये कैसे इंग्लिश बोल रहा है, ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, अरे कितने एरर्स हैं, इसको तो बोलना ही नहीं आता. Just forget about them. आप जब भी कुछ करना चाहते हैं ना रिवोल्यूशनरी, ये समझ लें कि लोग अपोज में आ जाते हैं आप पे.
ठीक है, आपको अपने ट्रेनर पे कॉन्फिडेंस रखना है। ट्रेनर में इतना पेशेंस है, your trainer has that much patience. He will bear up your wrong English. He will bear up you taking some more time to speak. Take your own time. अपना टाइम लीजिए जितना आप चाहते हैं. What we need to do is persistence and hard work. So, ये आप करते हैं. अक्सर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि बस IELTS का है तो स्कोर आ जाए, PTE का है स्कोर आ जाए, या इंटरव्यू का है तो बस हमारा सिलेक्शन हो जाए, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि ऐसे ही हो जाए. नहीं, ऐसा ही नहीं होता है. विल हैव टू वर्क एज अ टीम, राइट. आपको सीढ़ियों से चढ़ना है तो आपको विजन में रखना है लास्ट स्टेप, देखना है फर्स्ट स्टेप जहां से आप शुरू करें. जो आपने पूछा था, स्टार्ट कहां से करें? आप बेसिक से स्टार्ट करें. ग्रास रूट्स जिसके स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट्स हु हैव गुड बेसिक्स दे लर्न बेटर. शमीम साहब, क्या आप ऐसा नहीं सोचें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, मुझे तो इतना आता है. अगर आप एक एप्पल के बारे में भी बोल रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एप्पल, बीइंग अ ग्रेजुएट यू शुड really take that topic to that level. You should not sound like a kid of a first standard that apple is red, apple is round, apple is sweet, we cut apple, we eat apple, apple is very healthy, I love apple. So that's the way how a kid speaks. And see, that also needs confidence. If you're not able to speak even that much with confidence, then you will have to practice. आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कम से कम उस लेवल पे तो बोलें, फिर आए आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे. आप कैसे बोलेंगे उस एप्पल के बारे में? ऐसा तो नहीं बोलेंगे. So to achieve that, ideal state, you will have to work hard and you start enjoying, fall in love with it. आपको जैसे मोहब्बत हो जानी चाहिए कि यार आज हमने ना इतने वर्ड्स सीखने हैं, इतने हमने घंटे प्रैक्टिस की, हमने सर को कितना होमवर्क सेंड किया. बट मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स इन द बिगिनिंग दे आर बिट enthusiastic, but slowly their enthusiasm goes down, and this happens because they want to do the things in a few days. वो कुछ दिनों में कर लेना चाहते हैं. No, Rome was not built in a day. If you want to speak English like me, you will have to work hard, and it does not have any other way. That's the thing. हाँ sir, please. सर, मेरे को एक बात बताइए कि कॉमन इश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट जो फेस करते हैं आईएलटीएस के लिए, जो जाते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, उनके कॉमन इश्यूज आपने क्या ऑब्जर्व किए हैं? Sir, when it comes to IELTS, IELTS is not only about English language skills, but also about IQ. आपका IQ अच्छा बहुत होना चाहिए IELTS के स्टूडेंट्स के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, frankly speaking. And IQ cannot be developed in a day or two. It happens with continuous practice and understanding the pattern of your exam. आप एग्जाम के पेपर के पैटर्न को समझें, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना और क्विकली रिएक्ट करना, क्विकली डिसीजन लेना. जैसे आप रीडिंग अगर सेक्शन कर रहे हैं तो रीडिंग सेक्शन के अंदर आपकी आंखें क्या देखती हैं? आपकी आंखें वही देखना चाहती हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. टेक्स्ट इतना सारा दिया हुआ होता है, इट हैज सो मेनी वर्ड्स, and but we need not to see all the words. We need to look for what we want to look for. That is the given task, whether it is true or false, fill in the blank, or list of headings. So जो भी task है, for example, if your phone is lost and you are looking for it here and there, so what will happen? Your mind will start imagining it everywhere. आपका दिमाग वहां देखने लग जाता है कि यार टेबल पे, डेस्क पे, यहाँ बेडरूम में. So your mind starts visualizing that. Same thing and same technique is used in reading. कि आपको वही एरर या वही टास्क ढूंढनी है जो कि आप चाहते हैं. सब कुछ नहीं देखना होता, तभी आप प्रॉम्प्टली एक्ट कर पाते हैं और कॉन्फिडेंटली एक आंसर
लिख पाते हैं। यस ओके सर, ऐसे कौन से मतलब टिप्स होंगे बड़ा शॉर्ट, मतलब 2-3 मिनट्स में अगर मैं बता पाऊँ आप स्टूडेंट्स को, उनकी हेल्प हो पाएगी? जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, क्या मतलब लिसनिंग में क्या करें, रीडिंग में क्या करें, राइटिंग में क्या करें, और स्पीकिंग के लिए तो आपने टेक्निक्स काफी बताई हैं, जो बाकी मॉड्यूल हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगा? स्पीकिंग के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि स्पीकिंग के अंदर स्टूडेंट्स का एक जो पार्ट 2 होता है, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 2 मिनट्स आपको कॉन्टिन्यूसली बोलना है, दैट्स वेरी चैलेंजिंग। एट द सेम टाइम जो पार्ट 1 होता है उसमें क्वेश्चंस बड़े आसान आसान दिखते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि वो बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू बी आंसर्ड, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट like describe an evening that is spent with your parents or your wife. So like I never thought of that kind of evening ever. मैंने कभी नहीं सोचा कि कौन सी evening थी भाई. Describe an interesting person you met while you were traveling. I never met an interesting person in my life. मैं तो कभी मिला नहीं किसी interesting person से, मैं कहाँ से बोलूं? So ये वो सवाल है कि आपको आना चाहिए हाउ टू कुक अप अ स्टोरी, कैसे एक स्टोरी बनती है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई चीज आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं मिले इंटरेस्टिंग पर्सन से, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग पर्सन कैसा होगा? ह्यूमरस हो सकता है, बहुत नॉलेजेबल हो सकता है, बहुत सिंपल हो सकता है, एट द सेम टाइम रिच हो सकता है। सो ऐसे अलग टाइप हो सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं यार ये इंटरेस्टिंग कैटेगरी। तो यहाँ से आपका आईक्यू काम करना चालू होना चाहिए, एंड यू स्टार्ट कुकिंग अप अ स्टोरी क्विकली। सो विद प्रैक्टिस दैट कैन हैपन। Like I'm sorry to say, but there are teachers, they and trainers, they depend on mugging up answers. आप रट्टाफिकेशन नहीं कीजिए, आपको वो क्वेश्चन कुछ और पूछ लेंगे, then you will be bamboozled completely. Yeah. You will go blind here. Right? So it's about language, learn it naturally. So whatever the topic is, you should be able to talk about it. Writing के अंदर students क्या problem face करते हैं, let me tell you. The main problem what they face is ideas. They often complain, whether the students are from Kerala or Delhi or Rajasthan, they often complain to me that they don't get ideas. So here what I recommend is to think critically. So यहाँ पर आपको develop करनी है critical thinking. See, IELTS is not a piece of cake. Exactly. So you will have to develop, these basic things: critical thinking, emotional intelligence, observation. Enhance your observation. आप अपना observation बढ़ाएं. So जब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, 1 month 2 month, और अगर आपका स्कोर नहीं आता है तो फिर आप 3 months का भी लेते हैं. So it depends on your, जो कोर्स ड्यूरेशन होती है, it depends on your current level of English. If you have got good basics, then what I recommend students, they should solve at least 25 practice sets and 4 mock tests. So 25 to 26 आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और 4 मॉक टेस्ट लें. अगर आपका स्कोर कंसिस्टेंट रहता है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मेरा एवरेज स्कोर 7 आ रहा है, 7.5 आता है या 8 आता है, देन आई शुड go for my registration to British Council और IDP. तो राइटिंग सेक्शन के लिए मैं ये बोलता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. जैसे क्वेश्चन आ गया कि these days I'm talking about task 2. Many people like to build houses in the outskirts of the cities, whereas some people think that houses should not be built in the outskirts of the city. What do you think? What is the topic about? This topic is about how conscious you are and well aware you are about environment. तो अब आपका इंटरेस्ट नहीं है environment में, आप कैसे लिखोगे? Right. So
मेरे सेशंस में स्पेशली मैं ओरिएंटेशन देता हूँ स्टूडेंट्स को, स्पीच देता हूँ अबाउट एनवायरनमेंट. सो कई टॉपिक्स हैं जो कि साइंस बेस्ड हैं, एंड इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड it might be a little bit difficult for you to write or speak or even read, go for reading section, क्योंकि वोकैबलरी जो है वो साइंटिफिक वोकैबलरी है. सो उसको समझने के लिए आपको ऐसे लेक्चर्स लेने चाहिए जिसमें साइंस की थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई जाए. वोकैबलरी का रोल आ जाता है यहाँ पर, राइट. So for example, global warming, if you don't have any idea about global warming, how will you write about it, right? So information भी बहुत जरूरी है. बच्चों में रीडिंग हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग. सो अगर आपको ये सब चाहिए तो आप पहले बेसिक सीखें, मतलब कि कैजुअली रीड करना शुरू कर दें. कम से कम आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ लें, मैगजीन्स के अंदर देखें, और आप हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, इनके आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, जिसमें आपकी रीडिंग के लिए आपको हैबिट मिलेगी, वोकैबुलरी मिलेगी, आपको हैबिट बन जाएगी आपकी रीड करने की. राइटिंग के लिए कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा कि हाँ ये आइडियाज होते हैं. शमीम साहब, जो आपकी बातों से मैं समझा हूँ वो ये है कि बेसिकली अ गुड मेंटर और द बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट टीचर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है. तो मैं अपने लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको कंक्लूड करूंगा. आप ये बताइए कि ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? आईएलटीएस के जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग कितनी जरूरी है इससे पहले कि वो अपनी क्लास में जाएं आईएलटीएस की? See, a good trainer is a good student. As a student आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे. यही ट्रेनिंग है एक्चुअली. एक्चुअल ट्रेनिंग इज दिस वन ओनली. ये वो वर्कशॉप्स में नहीं हो पाता. 3 days या 15 days वर्कशॉप्स में ये चीजें नहीं हो पाती. इसके अंदर आप ही परफॉर्मर हैं और आप ही क्रिटिक हैं, आप ही इवेल्युएटर हैं, आप ही ऑब्जर्वर हैं, आप ही परफॉर्मर हैं. सो ये आप ट्रेनिंग खुद को देना शुरू करें. इफ यू आर इंटेंडेड टू बिकम अ ट्रेनर, सो दैट्स व्हाट आई हैव डन. I am thankful to American TESOL Institute. I'm thankful to British Council. At the same time, what I have become is because of my motivation. So I got some idea from them, but then whatever I got as an idea, I applied in my teaching. आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इन चीजों के लिए. आप कितने एम्पैथेटिक हैं, कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं अपने स्टूडेंट को लेके, एंड हाउ वरीड यू आर अबाउट योर स्टूडेंट हु हैज पेड यू, हु इज गोइंग टू पे the authorities for the exam. So it costs a lot. Time hai, paisa hai, everything is there. So it should be paid off, right? So hak ada hona chahiye uska. That should be the ultimate goal of teaching. Thanks a lot, Shamim sir. It was very nice experience to talk to you. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही आप मलेरकोटला आते हो तो the best techniques you are having, और आप बहुत अच्छा दे पाओगे स्टूडेंट्स को. मेरे एरिया का जो स्टूडेंट है उसको बहुत अच्छा ट्रेन कर पाओगे, और you can just reach up to the expectations of the students and their parents also. और शमीम साहब कितने आउणगे, किवें आउणगे, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, क्योंकि I just want to hide something from the audience. मैं कुछ लुको के भी रखना चाहना, क्योंकि ਆਪਾਂ बार-बार ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. 2-3 ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ. ਔਰ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ, in the end, thanks a lot. Thank you very much for being with us for some time. Okay. A little bit I would like to add. Like next time I would like to see some audiences, some students who are curious to know about things. They can ask me a question and I will be really pleased to answer their questions. And before we end, I will teach you a small thing, and remember this. And next time when I come to really come to Malerkotla,
I would like my students performing this thing. Like it's a technique which I often use to teach tenses. It is this. I always dance like this in first form of verb. Right now, you can see I am dancing like this. And yesterday, I danced like that with second form. So this is present. That's go back to past in second form. Okay. So just remember this dance. So I always dance like this. Right now, you can see I am dancing like this. And yesterday, I danced like that. So thank you so much for listening to me. And it was really a great interview.